Hello everyone, welcome to the free 5-day crash course on cultural studies and आज है डे 5। काफ़ी जल्दी हम लोग इस जर्नी में डे 5 यानी कि हमारे लास्ट डे पर पहुंच चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने पहले के जो कल्चरल स्टडी सीरीज़ के 4 लेक्चर्स हैं उन्हें देख लिया होगा। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछिए। अगर आपने अभी तक ये वो चारों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए, क्योंकि वही आपको कल्चरल स्टडीज़ को समझने में इम्पॉर्टेंट कदम होगा। आज डे 5 लेक्चर 5 में हम करने जा रहे हैं MCQ राउंड। इसमें मैंने बेसिक लेवल से लेके कुछ हार्ड क्वेश्चन तक सब क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो अंत तक बने रहिए। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और जिन क्वेश्चंस के भी आपको जानकारी नहीं थी वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग ये MCQ राउंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु कॉइन्ड द टर्म कल्चरल स्टडीज? ऑप्शन ए स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन बी रेमंड विलियम्स, ऑप्शन सी जॉन बॉड्रियार्ड, ऑप्शन डी रिचर्ड हॉगार्ड। तो हमें आंसर पता है, आंसर है डी रिचर्ड हॉगार्ड। जब रिचर्ड हॉगार्ड ने CCCS की 1964 में स्थापना की थी तब उन्होंने कल्चरल स्टडी टर्म को दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सेंटर सेटअप फॉर स्टडीइंग कल्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कॉल्ड? A, B, C, D ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, ऑप्शन बी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज, ऑप्शन सी सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, ऑप्शन डी सेंटर फॉर न्यू कल्चरल स्टडीज। जैसा कि मैंने अभी बोला, CCCS यानी कि ऑप्शन ए सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज आर ट्रू ऑफ Raymond Williams' Culture and Society? It critiqued the idea of high culture. It overlooked the idea of high culture. It defines culture as a way of life. It equates culture with science. Choose the correct answer from the options given below. Options are A and C only, A and D only, A and B only, B and D only. So answer number 1 is correct. A and C only. It critiques the idea of high culture and defines culture as a way of life. Next question. Identify the work which has not been authored by famous cultural critic Raymond Williams. इनमें से कौन सा वर्क रेमंड विलियम का नहीं है? ऑप्शन ए द कंट्री एंड द सिटी, ऑप्शन बी कल्चर एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ये E.P. थॉमसन की बुक है जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट्स अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल इंक्लूड द फॉलोइंग। इट वाज फाउंडेड इन फ्रैंकफर्ट 1925. Adorno and Horkheimer were its two members. The school established the word cultural theory. It has strong ties with the thinkers of linguistic circle. It was found into exile with the ascendancy of Nazism in Germany. Choose the correct answer for the option given below. B, C and D only, A, B and C only, A, C and E only, B, C and E only. फ्रैंकफर्ट स्कूल 1925 में फाउंड नहीं हुआ था, वो 1923 में हुआ था। जो भी है अडर्नो एंड हॉर्कहाइमर वर टू मेंबर, जो कि करेक्ट है। कल्चरल थियोरी फ्रैंकफर्ट स्कूल नहीं दी थी, तो वो सी वाला भी करेक्ट है, डी वाला रॉन्ग है और ये वाली बात सच है। जर्मनी में नाजिज्म के बढ़ने की वजह से जर्मनी को छोड़कर जाना पड़ा था, तो यानी कि बी, सी और ई करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी बाय एंटोनियो ग्राम्सी? ऑप्शन ए डोमिनेंस अचीव्ड थ्रू फोर्स एंड कोअर्शन, यानी कि डोमिनेंस जो कि फोर्स और कोअर्शन, कोअर्शन का मतलब होता है बल, अपनी शक्ति और पावर, अपने पूरे बल का इस्तेमाल कर जो डोमिनेंस ली हो,
द यूज ऑफ मीडिया टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, यानी कि मीडिया का यूज कर पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश। ऑप्शन सी, लीडरशिप और डोमिनेंस, स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप अचीव्ड थ्रू कंसेंट, यानी कि किसी एक ग्रुप पर या किसी एक स्टेट पर डोमिनेशन, वो भी वहाँ के लोगों की सहमति से। ऑप्शन डी, द कंट्रोल ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन बाय अ रूलिंग एलीट, यानी कि किसी सुपीरियर के द्वारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको चलाना। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टुअर्ट हॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन डील्स विद द एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी इन मीडिया, यानी कि मीडिया में रियलिटी का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन दिखाना। ऑप्शन बी, द वे इन विच लैंग्वेज एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू क्रिएट मीनिंग, यानी कि वह तरीका जिसमें लैंग्वेज और सिंबल का यूज़ किया जाता है मीनिंग को क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन सी, द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन लिटरेचर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टुवर्ड लुइस अल्थ्यूजर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिव, यानी कि ISA, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ISA में इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं। ऑप्शन ए, पुलिस एंड मिलिट्री, जो कि ऑब्वियसली गलत है क्योंकि वो RSA के उदाहरण है। ऑप्शन बी, द एजुकेशन सिस्टम एंड मीडिया, द लीगल सिस्टम एंड प्रिजन, ये RSA के उदाहरण है। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी, जो कि ऑप्शन डी है, ये भी RSA के उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मिशेल फोको थियरी ऑफ पावर नॉलेज सजेस्ट दैट, ऑप्शन ए, पावर इज ओनली एक्सरसाइज थ्रू कोअर्शन, यानी कि पावर का जो यूज़ है वो ओनली फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा किया जा सकता है। नॉलेज इज सेपरेटेड फ्रॉम पावर एंड प्योरली ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो नॉलेज है वो पावर से अलग है। ऑप्शन सी, पावर एंड नॉलेज आर इंटरलिंक्ड एंड नॉलेज इज यूज्ड टू कंट्रोल सोसाइटी, यानी कि पावर और नॉलेज आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, और जो नॉलेज है उससे ही सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पावर इज ऑलवेज विजिबल एंड इजीली आइडेंटिफाइबल, यानी कि जो पावर है वो हमेशा दिखाई देती है, हमेशा विजिबल होती है और आप उसे आसानी से पहचान सकते। पर जो मिशेल फोको का पावर एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शन सी को दर्शाता है कि पावर और नॉलेज आपस में इंटरलिंक्ड हैं और नॉलेज को ही हम सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। अर्जुन अपादुराई's concept of mediascape refers to the option A, the global flow of media images and narrative that shapes cultural perception. Option B, the domination of local media by global corporations. Option C, the resistance of traditional media to digital transformation. Option D, the regulation of media content by government. इसका आंसर है ऑप्शन ए। अर्जुन अपादुराई ने 5 तरह के स्केप्स दिए, बाकी के 4 कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is a key feature of postmodernism in popular culture? Option A, clear distinction between high and low culture. Option B, a celebration of unity and coherence of cultural narrative. Option C, the binding of different styles and genres without a clear hierarchy. Option D, the rejection of all forms of popular culture as meaningless. Option C is the correct answer. Next question. Edward Said's concept of Orientalism primarily critique. Option A, the representation of East as mysterious, exotic, other by the West. Option B, the celebration of Eastern culture. Option C, the adoption of Eastern religious practices by Western society. Option D, the economic exploitation of Eastern resources by Western society. Option A is the correct answer. I know questions are very easy. These are the basic questions I'm asking in the beginning. Next question. The concept of hybridity as proposed by Homi K. Bhabha suggests option A, culture remain pure and untouched.
by external influences. Option B, cultures are static and unchanging. Option C, cultural identities are mixed and constantly evolving due to interaction between different groups. Option D, hybridity is negative consequence of globalization. Option C is the correct answer. Next question. Arrange the following works by Richard Hogarth in chronological order. Option A, An Imagined Life. Option B, The Use of Literacy. Option C, Higher Education Demand and Response. Option D, A Local Habitation. Option E, A Sort of Clowning. Choose the correct option given below. The correct sequence is option 4. The use of literacy, higher education demand response, a local habitation, a sort of clowning, and then an imagined life. Next question. Which among the following is not associated with cultural imperialism? Option A, Jonathan Dollemore. Option B, Alan Sinfield. Option C, Raymond Williams. Option D, Stanley Fish. Option number D is the correct answer. Next question. Who is known as the father of critical theory? यानी कि critical theory के father कौन कहे जाते हैं? Option A, Johann Habermas. Option B, Herbert Marcus. Option C, Max Horkheimer. Option D, Judith Butler. Answer is option number C, Max Horkheimer. एडर्नो के साथ मिलकर critical theory दी थी. Next question. Who is associated with the term public sphere? Option A, Jürgen Habermas. Option B, Max Horkheimer. Option C, Theodore Adorno. Option D, Erich Fromm. इसका आंसर है ऑप्शन ए, Jürgen Habermas. Next question. Which of these is not a work by Roland Barthes? Option A, Death of an Author. Option B, Mythologies. Option C, The Pleasure of the Text. Option D, What is an Author? Option D is the correct answer. What is an Author is a work by Michel Foucault. Next question. Which theory emphasizes the role of audience in interpreting media text? Option A, Structuralism. Option B, Semiotics. Option C, Encoding-Decoding Model. Option D, Marxism. Option C is the correct answer. Encoding-Decoding Model by Stuart Hall. Next question. Cultural studies is interdisciplinary in nature. Which of the following fields it draw from? Option A, sociology. Option B, literary theory. Option C, anthropology. Option D, all of the above. Answer is all of the above. Because कल्चरल स्टडी अलग अलग तरह के टॉपिक, कॉन्सेप्ट, डिसिप्लिन से मिलकर बनी है. इसमें आप सोशियोलॉजी भी पढ़ते हो, इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, इसमें आप एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हो, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ पढ़ते हो, मीडिया एंड मास कल्चर पढ़ते हो, मार्क्सिज्म भी आ जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म भी आ जाता है. काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनी है क्योंकि हमारा कल्चर काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म कल्चरल कैपिटल was coined by which sociologist? Option A, Karl Marx. Option B, Pierre Bourdieu. Option C, Stuart Hall. Option D, Raymond Williams. Option B, Pierre Bourdieu coined the term. Next question. Which of the following best defines subculture? Option A, the dominant culture within a society. Option B, a group with shared values that differ from the mainstream culture. Option C, the culture of the elites. Option D, a culture that rejects all social forms. Option B is the correct answer. सबकल्चर दिया किस theorist ने था? जल्दी से बोलो. Rick Habich. Next question. Who among the following is associated with the concept of discourse? Option A, Stuart Hall. Option B, Jacques Derrida. Option C, Michel Foucault. Option D, Louis Althusser. Option C is the correct answer. Next question. Diaspora in cultural studies refers to Option A, the influence of pop culture on a global scale. Option B, the preservation of Asian culture. Option C,
The dispersion of people from their homeland. Option D, the study of historical texts. Option C is the correct answer. Next question, which theorist is associated with the term imagined communities in relation to nationalism? Option A, Benedict Anderson. Option B, Edward Said. Option C, Homi Bhabha. Option D, Frantz Fanon. Answer is option A, Benedict Anderson. Next question, who coined the term intersectionality? Option A, Judith Butler. Option B, Kimberly Crenshaw. Option C, Dick Habage. Option D, Adrian Rich. Kimberly Crenshaw is the correct answer. Next question, Gender Trouble is a work by option A, Gayatri Spivak. Option B, Kimberly Crenshaw. Option C, Adrian Rich. Option D, Judith Butler. Answer is Judith Butler, option D, published in 1990. Next question, the McDonaldization of society is a work by option A, Stuart Hall. Option B, George Ritzer. Option C, Frantz Fanon. Option D, Paul Gilroy. Option B is the correct answer. Next question, John Baudrillard's work Simulacra and Simulation, published in option A, 1981, option B, 1985, option C, 1885, option D, 1976. Option A is the correct answer, 1981. जिन्होंने अब तक के मेरे सारे वीडियोस देखे हैं उन्हें मोस्ट ऑफ द आंसर्स आसानी से आ रहे होंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बाय which of the below mentioned critic? I was indignant. I demanded an explanation. Nothing happened. I burst apart. Options are option A, Gayatri Chakravarti Spivak. Option B, Homi K. Bhabha. Option C, Stuart Hall. Option D, Frantz Fanon. Answer is option D, Frantz Fanon. ये उनके ऐसे द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस के एब्सॉर्ब से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1, ऑप्शन ए, द एम्पायर राइट्स बैक. ऑप्शन बी, नेशन एंड नरेशन. ऑप्शन सी, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म. ऑप्शन डी, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन. लिस्ट 2, 1990, 1993, 1989, 1971. यानी कि लिस्ट 1 में जो बुक्स दिए हैं लिस्ट 2 में उनके पब्लिकेशंस के साथ उन्हें मैच करना है. तो इसका करेक्ट आंसर है इन ऑप्शन नंबर 2, द एम्पायर राइट्स बैक का थर्ड से, यानी कि 1989, नेशन एंड नरेशन 1990, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म 1993, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन 1971. Next question, Raymond William is known for which concept in cultural studies? Option A, hegemony. Option B, structure of feeling. Option C, deconstruction. Option D, orientalism. Option B is the correct answer. Next question, in Stuart Hall's model of communication, which of the following is not one of the possible positions that audience can take when decoding a message? Option A, dominant hegemonic position. Option B, negotiated position. Option C, resistance position. Option D, oppositional position. तो स्टुअर्ट हॉल ने जो हमें कम्युनिकेशन के और ऑडियंस के रिएक्ट करने के 3 पोजीशंस बताए थे, उनमें था नेगो रीडिंग जिसमें ऑडियंस नेगोशिएट करती है, एक था पोजिशनल रीडिंग जिसमें वो पूरा ही मैसेज डिस्कार्ड कर देती है, अपोज करती है, और एक था डोमिनेंट यानी कि जो मैसेज डिकोड किया गया है उसे वैसे ही समझा जाता है. जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन उसमें नहीं दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थियरिस्ट इज नोन फॉर द आइडिया ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म? ऑप्शन ए, एंटोनियो ग्राम्सी. ऑप्शन बी, रेमंड विलियम. Option C, Stuart Hall. Option D, Michel Foucault. Answer is option B, Raymond Williams.
Raymond William is very important in cultural studies. Next question, which of the following is key theme of feminist cultural studies? Option A, the relationship between media and politics. Option A, examination of gender role and power dynamic in society. Option C, the analysis of class structure in modern capitalism. Option D, the influence of postmodernism on literature. The obvious answer is option B. Next question, who gave the concept of third space in cultural studies? Option A, Homi K. Bhabha. Option B, Edward Said. Option C, Gayatri Spivak. Option D, Franz Fanon. Option A, Homi K. Bhabha is the correct answer. Next question, which theorist is associated with the term biopower? Option A, Judith Butler. Option B, Antonio Gramsci. Option C, Michel Foucault. Option D, Roland Barthes. Option C, Michel Foucault is the right answer. Next question, arrange the following works of Raymond William in chronological order. Option A, keywords. Option B, Marxism and literature. Option C, culture and society. Option D, the long revolution. Choose the correct sequence given below. सबसे पहले आई कल्चर एंड सोसाइटी, फिर आई द लॉन्ग रेवोल्यूशन, फिर कीवर्ड्स एंड देन मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which came first in Stuart Hall's career as a cultural study theorist? Option A, publication of Policing the Crisis. Option B, directorship of the CCCS. Option C, development of encoding decoding model. Option D, co-founding New Left Review. तो इनमें से कौन सा पड़ाव स्टुअर्ट हॉल की जिंदगी में सबसे पहले आया? तो इसका आंसर है डी, co-founding of New Left Review. Next question, which of the following book of Homi K. Bhabha published first? Option A, The Location of Culture. Option B, Nation and Narration. Option C, The Commitment to Theory. Option D, Of Mimicry and Man. आंसर है इसका ऑप्शन बी, नेशन एंड नरेशन, जो कि 1990 में सबसे पहले आई थी. लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में आई थी. कमिटमेंट टू थियरी 1988. ऑफ मिमिक्री एंड मैन 1984. ये दोनों पहले ऐसे थे, पहले इन्हें अलग पब्लिश किया गया था, हालांकि इन्हें बाद में 1994 में अलग से दोबारा पब्लिश किया गया था. इसीलिए जब हम पब्लिकेशन के पहले पूछते हैं कि इन चारों में से पहले पब्लिश कौन हुआ है, तो इन दोनों का नाम नहीं लिया जाता, नेशन एंड नरेशन को ही पहले रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट वर्क पब्लिश्ड फर्स्ट? ऑप्शन ए, फ्रेंच फैनन्स द रेचर्ड ऑफ द अर्थ. ऑप्शन बी, गायत्री स्पिवैक्स कैन द सबल्टन स्पीक. ऑप्शन सी, होमी भाभा's लोकेशन ऑफ कल्चर. ऑप्शन डी, ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड साइड. आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच फैनन रेचर्ड ऑफ द अर्थ 1961 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिकेड डिड मिशेल फुको कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड पनिश बिकेम वाइडली रिकॉग्नाइज्ड? ऑप्शन ए 1950s, ऑप्शन बी 1960s, ऑप्शन सी 1970s, ऑप्शन डी 1980s. ऑप्शन सी 1970s इज द करेक्ट आंसर. ऑल्सो ये 1975 में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन? आंसर इज कैथरीन हेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक ट्रूथ एंड मेथड इज हांस गियोर्ग गैडमर. ही इज एसोसिएटेड विद, यानी कि ट्रूथ और मेथड के ऑथर हैं हांस गियोर्ग गैडमर. वो किस चीज़ से एसोसिएट किए जाते हैं आमतौर पर? द आंसर इज हर्मेन्यूटिक्स. हर्मेन्यूटिक्स मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी फिलोसफी और इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलिज्म एंड सीजोफेनिया इज अ 2-volume बुक बाय. आंसर इज जिल डेल्यूज एंड फीलिक्स ग्वात्री. कैपिटलिज्म एंड सीजोफेनिया डेल्यूज एंड ग्वात्री के द्वारा लिखी गई थी. ये 2 वॉल्यूम में लिखी गई है.
एंटी इडिपस जो कि 1972 में आई थी, दूसरा 1000 प्लेटियस 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती एंड पार्थ चैटर्जी आर पार्ट ऑफ विच स्कूल? आंसर इज सबाल्टर्न स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the eco-criticism reader is edited by? Answer is Cheryl Clott Felty and Harold. The eco-criticism reader 1996 में publish हुई थी। Who discovered the concept of meta-history? Answer is Hayden White. Meta-history, the historical imagination in 19th century Europe, is a book by Hayden White जो कि 1973 में आई थी। Next question, Ways of Seeing is a book by? Answer is John Berger. Ways of Seeing पहले एक टेलीविजन सीरीज थी जॉन बर्जर की जो कि 1972 में एयर हुई थी। जॉन बर्जर इस सीरीज के राइटर थे और बाद में उन्होंने इसी के ऊपर बुक लिखी और उसे पब्लिश किया 1972 में ही। टेलीविज़न स्टडीज़ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से में से है। टेलीविज़न स्टडीज़ कल्चरल स्टडीज़ में अपने आप में ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक एल्बर्ट स्टिल इज एसोसिएटेड विद? आंसर इज ट्रांसजेंडर स्टडीज। वो फेमिनिज्म, क्वेयर थ्योरी, ट्रांसजेंडर स्टडीज और पॉपुलर कल्चर के थियरिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रयू रोज एंड लॉरेंस ग्रॉसबर्ग आर पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ? आंसर इज popular culture. Next question, culture is one of 2 or 3 most complicated words in English language. Is a statement by Raymond Williams. In which work he stated that? Answer is keywords. Next question, which of these is not an idea discussed in Television Technology and Cultural Form by Raymond Williams? Option A, how television as a technology came into existence. Option B, what aspect of culture defined television. Option C, countering Marshall McLuhan's concept of technological determinism. Option D, how television changed in time of internet and globalization. Answer is option D, because उस टाइम पे इतना globalization और internet था ही नहीं। Next question, Resources of Hope is an essay collection by? Answer is Raymond Williams. Next question, the Open University of UK offered an interdisciplinary course called U203 between 1982 and 1987. What was the course on? Answer is Popular Culture. ये कोर्स पॉपुलर कल्चर पर आधारित था। U203 इसका सब्जेक्ट कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड द कोर्स U203? आंसर इज टोनी बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ दीज वॉज नॉट द पार्ट ऑफ बुक डूइंग कल्चरल स्टडीज द स्टोरी ऑफ द सोनी वॉकमैन? ऑप्शन ए, स्टुअर्ट हॉल। ऑप्शन बी, पॉल गे। Option C, Linda James. Option D, John Fish. Option D is the correct answer. वो इसका पार्ट नहीं थे। Next question, in which book P.R. Bourdieu introduced the term intermediaries? Answer is Distinctions, जो कि 1979 में पब्लिश हुई थी। Next question, who has done the pioneer work on dromology in context of cyber culture? Answer is Paul Virilio. वो एक फ्रेंच क्रिटिक है और वो कल्चरल स्टडीज़ में मीडिया, टेक्नोलॉजी और कल्चर में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। वो स्पेस स्टडीज़ के एक थियरिस्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इज साइंस मल्टीकल्चरल? आंसर इज सैंड्रा हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अपादुराई's Modernity at Large is a book on? Answer is Cultural Dimensions of Globalization. Next question, who wrote notes on competitive femininity in New Colonial Time? Answer is Angela McRobbie. Next question, which of the following is not a major critic in film study? Option A, Richard Dyer.
Option B, Andrew Saris. Option C, David Bordwell. Option D, Michael Hart. Answer is Michael Hart. Next question. Who wrote the book on transgressive education? Proposed and engaged pedagogy. Answer is Bell Hooks. Next question. Compulsory able-bodiedness is concept proposed by. Answer is Robert McRuer. Next question. The book Zeros Plus One by Sadie Plant is about. आंसर इज डिजिटल विमेन एंड टेक्नो कल्चर। तो आज का ये MCQ का सेशन यहीं ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने बोला था, कल्चरल स्टडीज सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है और आप इस कल्चरल स्टडीज सीरीज़ की जर्नी से जुड़े रहे हैं शुरू से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि आपका कल्चरल स्टडी सीरीज़ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो तो अपने फेवरेट लोगों को ये सीरीज़ का लिंक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं या आप चाहते हैं मैं किसी अलग टॉपिक पर, किसी और चीज़ पर सीरीज़ बनाऊँ, या फिर इनमें से कल्चरल स्टडीज़ की जो चीज़ें छूट गई हैं मैं उन चीज़ों पर, उन कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा एक्सपीरियंस ये सीरीज़ का बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, तो थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये MCQ वाले लेक्चर 5 का PDF चाहिए MCQs का, तो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।